Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everyone. Okay, we will, before proceeding further, I am assuming the screen is there. In today's session, we are going to discuss important questions, not only from 20, but also from 19. The very first question, before we move forward and before we jump to the modern age, it is very important to understand that we have some movements, though there are a lot many movements, and definitely we are not supposed to cover all the movements. But some movements are important when you talk about your interviews perspective. So you're not going to ignore these movements, interviews perspective. The first movement that you need to remember is the Oxford movement. So you need to understand that Oxford movement was particularly religious in nature, and its aim was to rehabilitate the dignity of the church. And further on, you need to explore the details of the Oxford movement. That is important. Then you need to understand how this movement was important and the effects of this movement on literature. That is the second important question, by the way. Effects on literature, they are important. So from 19th century, you are supposed to cover these two important aspects. Moving on and talking about the third important perspective, third important question, that is about the personality. Well, if you talk about John Henry Newman been the center of a lot many discussions. Even back in 2017, there were 2 to 3 questions from this person, John Henry Newman. By the way, born in 1801 and died in 1890. The very first question about John Henry Newman is about his contribution. Why his contributions are considerable. So, you know, Henry Newman was the same person who wrote the idea of a university. So you need to understand all the things about John Henry Newman when you are talking about this person. So these are the important questions till 19th century. Now we are going to talk about and discuss the questions from 20th century. I'm sure that while you're preparing the questions and you are making down your own notes, you have some questions in your mind, like you are preparing your answer. Maybe you want to ask yourself, whatever I am preparing, my answer is up to the mark or not. Remember one thing I used to say and kept on saying, in literature, you need to take sides. In literature, you need to remain subjective all the time. That means you can take any direction. In case you want to prove that yes, Milton was from Satan's party, you can prove it. If you want to say, yes, he was not, maybe you can prove the same. But you need to build your all references on rational grounds. Rationality is the crux of your answers. Talking about the fourth question and mentioning this fourth question, we are putting
we are moving forward towards 20th century. Our today's session will be a shorter session as we haven't any interview today. I will just answer some of your questions in case you have about your interviews. After that, we are planning to go for the second round of interviews. In the first round, we have already highlighted your mistakes, all those areas where you were supposed to improve yourself. So this is the last round. So we will offer from tomorrow's onwards, we are going to offer you the last chance of your interview. That is the second round. So you are supposed to prepare yourself up to the mark. You are supposed to prepare all the questions because you have approximately completed the questions with us. So after literature, definitely we are going to talk about the questions of linguistics responsibility. Meanwhile, the interview sessions, the round 2 of the interview sessions, members, we are supposed to take your sessions once again because in the first session you have been informed about your mistakes and we are supposed to improve. And I'm sure that you guys have improved those particular portions, spaces, loopholes, and all. This time we are going to have fantastic interactions. Talking about the 20th century, 20th century is the name of major trends. 20th century is the name of a lot many movements. 20th century is the name of something that was different than all ages that been there in English literature. So the very thing is that before proceeding further and before talking about and embarking upon this journey of the questions, remember in 19th century, English literature became terribly chaotic. Chaos was there. Not only in literature, chaos was everywhere. Thousands of poems, thousands of poems were the writers were writing the poems and they were publishing on daily basis. So at different age. So the very first question is how 20th century highlighted individualism. So you need to mention enough reasons if your answer is in yes, that yes, 20th century is a century that highlighted individualism, you need to prove this particular point. Maybe you can talk about the negativity that every person, while he is mentioning anything, okay, okay. Is it fine now, Amna? Is it fine now? Okay. Meanwhile, individualism, after individualism, we have a very burning question that's been the part of a lot many interviews. And yes, this question is important, and we are expecting this question this time as well. The question is that after Lord Alfred Tennyson, why this age, the 20th century, is considered the barren age? 20th century opened with Lord Alfred Tennyson. So why we say that Tennyson, when Tennyson was dead, this century was dead? So why this widespread impression is there? So you need to answer this question as well. Really, we cannot ignore the importance of Lord Alfred Tennyson, but saying like Tennyson had been dead, and so we are saying that poetry had died with him, that is a bit difficult to manage. Participants, इससे पहले कि मैं 7th क्वेश्चन की तरफ चलूं, आज
आज वो लोकेलिटी से हैं, जो हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट से स्टूडेंट्स हैं, दो के हम फिजिकल सेशंस इसलिए भी ऑफर नहीं कर पाते हैं कि टाइम की कमी और दूसरे इश्यूज होते हैं कि मैनेज अप करना मुश्किल हो जाता है। आज दो स्टूडेंट्स लाइव सेशन में फिजिकल मोड में देवर इन माय ऑफिस 10 बजे के करीब गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज दस्ता में, वो मेरे पास आए दस्ता सियालकोट में। उन्होंने बताया कि सर हम इंग्लिश लेक्चर के जो हैं वो हम फील करते हैं कि हम बहुत अच्छी हमारी तैयारी है, और इससे पहले भी हम दो दफा अपीयर हो चुके हैं लेकिन हमारी सिलेक्शन नहीं हो सकी। तो MOCC का हमने ठीक ठाक नाम सुना तो हम आपके पास आए हैं और हम ये चाहते हैं कि आप ये बता सकें कि हम अभी कहाँ पे करें, हम आपको इवेल्युएट करना चाहते हैं। आई जस्ट वांट टू शेयर द रिजल्ट्स, क्योंकि उसमें कुछ है हमारे सीखने के लिए। लेकिन हमारे कुछ दूसरे दोस्तों ने भी उसी डिपार्टमेंट से हमें ज्वाइन कर लिया। द स्टोरी इज दैट कि न जाने हम क्यों इंट्रोडक्शंस को तैयार करते हुए ये भूल जाते हैं, क्यों फेवरेट जॉनरास को तैयार करते हुए ये भूल जाते हैं कि हमें compete करना है। हमारे जो कंपटीटर्स हैं वो कोई आम लोग नहीं है, वो आपकी तरह के नहीं है कि जिन्होंने ये सोचा कि चलो खैर है, आज PPSC डिले कर रहा है रिजल्ट्स को तो खैर है, हम भी कुछ 10 दिन गुजार लेते हैं, कोई बात नहीं, 5-6 दिन और चला जाते हैं, किताबें तो हम फिर भी पढ़ लेंगे। मुझे काफी अफसोस हुआ इंट्रोडक्शन सुनने के बाद, जो कि मुझे अपने ऑनलाइन सेशन में किसी एस्पिरेंट का ऐसा इंट्रोडक्शन मैंने नहीं सुना। एंड दैट्स वेरी गुड कि शायद आपकी इसमें मेहनत ज्यादा होती। The very reason is that when you're introducing yourself, somewhere you are selling your skills. और अगर आप इतने अट्रैक्टिव नहीं हो ना, तो आप कभी भी उनको अच्छे से सेल कर नहीं सकते हो। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जो बंदा इंटरव्यू देने के लिए PPSC के पास चला गया वो नाकाम हो गया। PPSC का इंटरव्यू 10 से 15 मिनट का एक ऐसा इंटरव्यू है जिसमें आपको लर्न करना है हाउ यू आर गोइंग टू एक्सेल, हाउ यू आर गोइंग टू कम्पीट विद अदर्स। कमरे से आपसे पहले वाला बंदा मुंह लटकाए हुए बाहर आ रहा है, आपको वहीं पे मोरल डाउन हो जाता है। यार ये उसका मामला है, इट्स नॉट योर स्टोरी, यू आर नॉट सपोज्ड टू पुट डाउन योर मोरल कि आपको इससे कोई कंसर्न नहीं, वो उसकी स्टोरी थी, वो उसके साथ हुआ। So the story, the conclusion of this whole story is, हम लोग सेल्फ ब्लैकमेल बहुत जल्द हो जाते हैं। हम लोगों को बहुत जल्द ये लगना शुरू हो जाता है कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, हम उसी में उसमें हम सब शामिल हैं, परहैप्स शायद मैं भी उसी में हूँ, और हम सब जो हैं वो इंसान हैं। सो हम बहुत जल्दी ये फील करते हैं। सेल्फ ब्लैकमेलिंग एक ऐसी चीज है कि हम एक किताब पढ़ के समझते हैं कि शायद हम तो अरिस्टोटल से भी आगे निकल गए हैं। याद रखिएगा, परमिशन को चीट नहीं किया जा सकता, ये बात लिख लीजिए। You will have to produce something that is different than others. आपको निकलना है एक्शंस में से, और उसके लिए जहद मुसलसल की जरूरत है। So उसके लिए if you're speaking and your spoken is not good, अगर आप इतनी देर में काम ही नहीं कर सके हो, it's not going to give you the benefit. So you need to take some positive steps. अगर आपको सारे लेक्चर्स लेने के बाद भी 2 से 3 दफा मॉक इंटरव्यूज के बाद भी, आपके साथ प्रीवियस सारे पेपर्स के क्वेश्चन शेयर होने के बाद भी, आपने कम से कम कोई 80 के करीब मॉक इंटरव्यू सेशंस को अटेंड किया, उसके बाद भी आप स्मार्टली इन इंटरव्यूज के अंदर से अपने लिए चीजें नहीं निकाल सके हो, आप घंटों के लेक्चर्स के बाद अपने 10 मिनट का डेटा नहीं निकाल सके कि वो 10 मिनट आपने किस कदर स्मार्टली बिहेव करना है, तो यकीन कीजिए ये सेल्फ ब्लैकमेलिंग या और कुछ नहीं। सो आई एम फीलिंग रियली सॉरी कि जो मेल साइड की जो सिचुएशन चल रही हैं, जो मेरे पास सैंपल साइज है या जो मैंने सिचुएशंस देखी हैं, particularly talking about my district, Sialkot. So I'm really disappointed to whatever is going on. और हमारे experience
खुसूसन इस डिले से जितना खुद को अब आई डोंट नो कि इसको कितना मैं सिविलाइज लहजे में कह सकूं, कितना खुद को जो है वो ख्वाबी खरगोश में रखे हुए हैं। सो इट्स नॉट गोइंग टू गिव देम द बेनिफिट्स। याद रखो, जब मेहनत करोगे यू आर सपोज टू बी समथिंग, कुछ पेन महसूस करना पड़ती है। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि मोबाइल फोन के ऊपर कोई भी गेम खेलना शुरू कर दो, घंटों गुजर जाएंगे, एंजॉय करोगे, चैट करना शुरू कर दो, एंजॉय करते चला जाओगे। लेकिन उसी में मोबाइल फोन पे अगर पीडीएफ में बुक पढ़नी पड़ जाए तो साथ ही हमें वो जो कहते हैं ना कि डेथ अकर हो जाती है, तो हम फील करते हैं वो नहीं मेरा तो हेडेक होना शुरू हो जाता है। ना ना ना, मोबाइल फोन पे हम अनएबल टू रीड। और शायद किसी ने बस ऊपर एसएमएस के ऊपर किसी ने सिर्फ इतनी बात लिख दी हो कि ये ये किसी को मत बताना, किसी को मत बताना, इट्स रियलिटी। और वो उसके नीचे कोई 2000 वर्ड्स का लंबे ऐसे भी लिखा होगा, तो आप उसको कंप्लीट पढ़ने के बाद ही सोएंगे। सो द स्टोरी इज these questions are very important. Competitive exams and particularly the interview of PPSC is not an ABC. आपको बहुत सीरियस रहना है, आपको बहुत सख्ती के साथ मेहनत करनी है, और आपको ये चीज अपनी फिंगर टिप्स पे रखनी है that you are there in the list. 5 के मुकाबले में 1 सीट है, और जिस तरह से म्यूजिकल चेयर में 5 लोग हैं, किसी एक को वो सिलेक्ट करेंगे एंड यू हैव टू प्रूव देयर कि आप जो हैं वो उनमें से द बेस्ट हैं। अगर सारी की सारी स्किल्स जो हैं वो अभी तक आपने नहीं सीखी, आपको अभी तक ये नहीं पता चल सका कि इंटरव्यू के रूम के अंदर जब मैंने एंटर होना है और जब मैंने उसको लीव करना है, मैंने किस तरह से अपनी पर्सनालिटी को कंपोज रखना है, मैंने उनको क्या प्रेजेंट करना है, मैं क्या बताना है। और इनफैक्ट अगर आपको ये नहीं पता चल सका कि आपके इंटरव्यू के अंदर अगला क्वेश्चन क्या आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन वो जो पूछने जा रहे हैं वो क्या होगा, इट मीन्स कि आपको भी मजीद वर्क करने की जरूरत है। रिलेटेड इंटरव्यूज के अंदर आपने अपने इंटरव्यूज को लेके चलना होता है, इंटरव्यू देना नहीं होता। हर लाइन में आपके वर्ड्स की सिलेक्शन ऐसी होनी चाहिए कि उसमें से सवाल निकले और उसी को आंसर करना पड़े, कोई नया क्वेश्चन ना दीजिए। ओके, आई एम श्योर कि आपको ये पता चलेगा। याद रखिएगा, कामयाब लोगों की चमक दमक, उनकी रौनकें, उनकी कामयाबियां हम सबको नजर आती हैं। उनके पीछे उन्होंने कितने अंधेरे काटे होते हैं, कितनी रातें जाग के पड़ा होता है जब दूसरे सो रहे होते हैं। तो यू विल हैव टू टेक योर डिसीजन। ये अभी टाइम है, इसको जरूर देखिएगा। दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर नॉट नोटिंग डाउन दीज क्वेश्चंस, अगर आपके पास इनके आंसर्स नहीं है, आप इनको नोट डाउन करके रख लेते हो, ओके ऑलराइट, इट्स नॉट गोइंग टू गिव यू द मार्क। आपको काफी इस पर वर्कआउट करना है। फिर बाद में जो है आपके पास एक ऐसा भी वक्त आता है कि जिसमें फिर आप मूव ऑन करना भी चाहते हो तो नहीं कर सकते हो, बर्डन बहुत ज्यादा होता है। ओके जी, टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको कुछ समझ में आया? और आई एम जस्ट बिल्डिंग द क्रिस्टल्स इन द एयर। ये जो सही के साथ ब्लैकमेलिंग से आप बचेंगे और मैक्सिमम टाइम अपनी स्टडीज के साथ जो है उसमें करेंगे। ओके, सो जी यहाँ से अब हम मूव ऑन करते हैं। द क्वेश्चन 7 इज अबाउट इजम्स। अब मैं आपको ज्यादा इजम्स उसमें से रिकमेंड नहीं करूंगा, बट माय रिकमेंडेशन इज टू गो फॉर इमेजिज्म एंड surrealism. So इमेजिज्म और surrealism जो है ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट मूवमेंट्स हैं जो कि क्वेश्चंस, और ना सिर्फ एक दफा बल्कि मैं ये देख रहा हूँ a lot many times, a lot many questions are there from these two particular movements. So what is imagism, what is surrealism? You are supposed to understand all the things. You are supposed to understand the difference between these two terms. इनको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। अगर आप 20th century की बात करोगे, the very thing that come about 20th century is modernism. Remember, it is difficult to define modernism. Modernism is not a term like Renaissance. It is not a term like Jacobean age.
completely different term having completely different meaning. So मॉडर्निज्म के अंदर जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और जो बहुत ज्यादा रेपुटेशन में आ रहा है वो ये है कि इसके अंदर इस एज के अंदर जो है जब डेफिनेटली हम मॉडर्निज्म की बात करेंगे तो हमारे पास टीएस इलियट का नाम आएगा। टीएस इलियट जो है वो कंसिडर किया जाता है कि ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस एज। Yes, it is, Fatima. It is. You're talking about the information that I have provided you. I'm not following Williams along right now. I'm just following the questions that have been the part of previous interviews. And I'm sharing my point of view. I'm sure that Williams along has covered all the things, but whatever I'm saying, that's not from that book. ये हमारा अपने पर्सनल क्वेश्चन बैंक है जो कि हर साल हम अपडेट करते रहते हैं और उसके आंसर्स हैं उनके ऊपर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको इसको किस तरह से हैंडल करना चाहिए। सो रिप्रेजेंटेटिव जो है हमारे पास टीएस इलियट है। टीएस इलियट, व्हाई टीएस इलियट इज कंसीडर्ड अ मॉडर्न पर्सन, इसके ऊपर क्वेश्चन है। सो इफ टीएस इलियट इज मॉडर्न then how you can say that he is a modern? अगर वो मॉडर्न है तो the very poems like the love songs of J. Alfred Prufrock के अंदर जो है हम देखते हैं कि वो तो he is talking about कि let's go you and me when the evening is spread out against the sky, something like that. So like a patient upon evening. So period as this age is out अगर आपको इशू आ रहा है so definitely problem से pessimism। बात करें was meant that came to evolve, that is the world war. It is not possible to ignore the gloom from the literature. Ultimately, literature is life. So this age is all right. The next question is about mechanism. This age and why this age is famous as the age of anxiety. You know, in 20th century, but you need to answer all questions in smart way. Smart answer करना है आपको अच्छा। 20th century के अंदर you have material prosperity, लेकिन इसके अंदर उसको तमाम हैं जो इससे पहले, और ये बात आपको पता होना चाहिए कि 20th सेंचुरी हमारे पास एक ऐसी सेंचुरी है जो कि मॉडर्न ना सिर्फ समझी जाती है बल्कि वो मॉडर्न है। अब ये डिपेंड करता है कि मॉडर्निज्म की आपने कौन सी डेफिनेशन ली है। तो आपके नजदीक मॉडर्निज्म की कौन सी डेफिनेशन है, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। बट रिमेंबर व्हेन यू आर सपोज्ड टू डिफाइन द एज ऑफ एंजाइटी, आपको स्क्रीन अभी विजिबल है?
screen is visible, but इसमें से बताइए मुझे। But जब आप बताना चाहोगे बाहर हो अभी आप तो जो है पता है कि सबसे ज्यादा बात करता ठीक है गुड। तो ज्यादातर लोगों ने प्रॉब्लम पड़ी हुई। गुड। सो मैं आपकी रिक्वेस्ट जब तो उसको कुछ ऐसी पॉइंट्स को रिसाइट करना, इनको याद रखना भी जरूरी। सो हॉलोमैथ के अंदर आपको स्टेज को टाइप तमाम चीजों का व्हाट इज हॉलोमैथ, pieces filled with straw alloys, तो ये चीजें और ये समझना को जाहिर करती है। So these are the important questions, and definitely the next we will include the maximum questions from this stage. So अभी जो है टाइम है कि हम आपके क्वेश्चंस को ले सकें। The house is open for you. आपके क्वेश्चन हैं opportunity को लेके आप वो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। If you have anything you may ask question और definitely सब पूछ सकते हैं। आज डिस्कशन सॉर्ट आउट करते हैं। आई थिंक कुछ बारिशें जो हैं वो काफी ज्यादा हैं, जिसकी वजह से अच्छा सभी के पास डिस्टॉर्शन है। ओके 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 ऑलराइट। Actually, we're seeing some problem on to rainy season. तो अभी it's fine अगर कुछ सेकंड भेज इसको ठीक रहता है सेव में मैं इसको ठीक अभी तो जो है मिस सुषमा साहिबा अभी तो नहीं आपको ऐसे Okay ji, welcome back everyone. I'm sure that it is fine now. We have switched from network A to network B, so it's fine now. So जो भी समझ में आया, the summary is we have discussed it's better, it's not clear, Uzma. It's just better. So it's not audible, it's not clear. You want to say? Is it clear? So I may proceed further. Okay, it's clear. It's okay now. Okay, thank you so much for your comments. Acha ji, so we have discussed 10 questions. I'm sure that you have understood all those questions. और हमने ये समझने की कोशिश की कि हम उनको किस तरह से आंसर करने की कोशिश करेंगे। नो माय क्वेश्चन इज कि अगर आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा कंसर्न है जो आपको समझ में नहीं आ सका, वो आप अपना क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। इन केस यू हैव क्वेश्चंस, अगर आपको इन क्वेश्चंस के मतलब कोई क्वेश्चन है वो भी पूछ सकते हैं। अगर आपके अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन में यू आर फीलिंग दैट देयर इज सम प्रॉब्लम, आपको उसके बारे में कुछ पूछना है तो आप वो भी पूछ सकते हैं।
तो ये अभी जो है वो हमारा हाउस ओपन है क्वेश्चन आंसर्स के लिए, सो यू मे गो ऑन विद योर क्वेश्चंस. यस, यू कैन आस्क द क्वेश्चन सर्वर. आप अपना माइक भी ओपन कर सकते हैं इफ यू वांट टू. I have allowed you to open your mic, server. Okay. So शरबत ने माइक ओपन, शरबत जो है वो टाइप करेंगे. ओके. So difference between lactic capability and chameleon poet. There is a noise in your background. मैंने आपका क्वेश्चन पढ़ लिया शरबत, और कुछ ऐड करना चाहेंगे तो बता सकते हैं आप. Okay, well, Sharabat, you need to understand when you talk about lactic capability, you are talking about the ability. Okay, एक एबिलिटी की बात कर रहे हो, आप इसको समझते हो, जिसमें निगेट करना सीखते हैं, जिसमें आप जो है वो निगेट कर सकते हो अपनी पर्सनालिटी को, आप उसमें से निकालते हो. ठीक है. सो नेगेटिव कैपेबिलिटी इज डिफरेंट टर्म एज कंपेयर टू कैमेलियन पोएट. Chameleon poet is basically a phrase that is associated with John Keats. ये टर्म, ये फ्रेज जॉन कीट्स अपने लेटर्स में इस्तेमाल करता है जब वो पोइट्री को शुरू करता है लिखना, पोइटिक करियर के आगाज में, जब वो टॉम और जॉर्ज को लेटर्स लिखना शुरू करता है. तो अब हमारे पास एक ऐसा पर्सन जो कि क्रिटिसिज्म यानी कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म पर जब बात करता है और वैसे ही ख्यालात का इजहार करता है जैसा कि जॉन कीट्स ने अपने काम में किया, उसी तरह के मफरूजों की बातें करता है, उसी तरह की थ्योरीज देता है, उसे हम कहते हैं कैमेलियन पोएट. क्लियर? कुछ समझ में आया? सर, आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन इट इन वेरी बेसिक टर्म्स. सो कीट्स जो है उसको कैमेलियन पोएट समझा जाता है, और उसकी वजह ये है कि वो हमारे पास जो है, जब आप कीट्स को देखते हैं, कीट्स अपने सराउंडिंग्स के बारे में देखता है, उनको इमिटेट करने की कोशिश करता है, थ्योरीज बनाने की कोशिश करता है, चीजों को इन्वोक करने की कोशिश करता है, लेटर्स के अंदर क्रिटिसाइज करने की कोशिश करता है. ठीक है. सो हमारे पास जो है ये हमारे पास कैमेलियन पोएट है. एक वजह ये है कि कैमेलियन पोएट हमारे पास एक ऐसी फ्रेज है जो कि कीट्स से एसोसिएट की जाती है, और कीट्स अपनी पोइट्री के अर्लियर करियर के अंदर इसको इस्तेमाल करता है, जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म से रिलेटेड है, और एक ऐसा पोएट जो कि कीट्स की तरह के आइडियाज को एज्यूम करता है, उनको इन्वोक करता है, उस तरह की थ्योरीज को, उस तरह के मफरूजों को प्रेजेंट करता है अपने काम में, उसे हम कैमेलियन पोएट कहते हैं. So did I answer your question? If yes, you may type yes, otherwise मैं जो है वो इसको further expand करूँ. Okay, thank you so much, Abud. What will be concise definition of modernism? Well, modernism को एक simple से term में explain करना या define करना मुमकिन नहीं है. We may say in fact, modernism is a collaboration of a lot many movements. मॉडर्निज्म को डिफाइन करने से पहले हमें ये बताना पड़ेगा कि सर बिफोर मॉडर्निज्म इट इज पर्टिनेंट टू मेंशन कि बिफोर दिस in English literature the ages were associated after monarchs or the famous writers, but modernism is a global movement. Modernism is something that is talking about the culture that is different than others. So briefly speaking, modernism is different than all previous ages. Modernism is the name of modern industrial life. Modernism is the name of new themes in poetry. Modernism is a movement, is an age that is rejecting the previous ideas. So these may be the brief definition of the modernism. Okay, Vivo 1811, I don't know अब आपका नाम क्या है, लेकिन मैं Vivo ही assume कर रहा हूँ. ओके वजी, आपका मैंने क्वेश्चन को आंसर कर दिया. अगर कुछ और है तो आप डिस्कस कर सकते हैं. सर, इफ फेवरेट जॉनरा इज ड्रामा, प्लीज गाइड फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, एज ड्रामा स्टार्टेड फ्रॉम ग्रीक्स एंड फ्रॉम वेयर टू एंड, एंड रिलेटेड थिंग्स दैट आई शुड कवर. अ वेरी गुड क्वेश्चन. वेल, द थिंग इज दैट जब आप ड्रामा का आंसर आपने खुद ही दे दिया कि ड्रामा आप कहाँ से शुरू करोगे,
आप ग्रीक से शुरू करोगे और आप कोशिश करोगे कि ड्रामा के अंदर जो है वो तमाम चीजें देख सको जो कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के, बल्कि सादा लफ्जों में बात करते हैं जो आपकी लिस्ट के अंदर शामिल है, ठीक है, जो लिस्ट के अंदर ड्रामा शामिल है आप उनको कवर कर सको। सो ड्रामा आप अपने स्पेसिफिक जॉनरा या फेवरेट जॉनरा से प्रिपेयर करोगे, ग्रीक से शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसके बाद जो हर एज का एक एक फेमस ड्रामाटिस्ट है उसको आप देख सकें, ठीक है। सो इसको आप जो है वो दैट इज द प्रिसाइज आंसर। वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ द टाइम, अगर किसी और का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पेश कर सकते हैं और आई विल ट्राई कि मैं उसे आपके ग्रुप में आंसर दे सकूं। अगर हमारे पास और कोई क्वेश्चन नहीं है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और फ्रॉम टुमारोज ऑनवर्ड्स हम अपने सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यूज की तरफ बढ़ेंगे जिसमें सभी को दोबारा एक चांस मिलेगा। सो गुड लक फॉर दैट। So no questions, that's all from my side. Take care of yourself. Have a good evening. Allah Hafiz.